Okay, yeah. Hello everyone. So Mr. Pranav is here. So hello Mr. Pranav, how are you? And very warm welcome to Apna Government Job channel. Thank you, Tejas, right? Yeah, yeah. Welcome. Thank you. Okay, I'm sir. fine. So first introduce about yourself that from which college you did your BTech, then when you joined PGCL. I'm Pranav Kumar. I'm working as a deputy manager right now in Power Grid Corporation of India Limited. I completed my graduation from NIT Silchar in 2014, and Okay, after that, okay. I got campus recruited, and I did my graduation in civil engineering. So, Okay, like, civil engineering. So it's I'm a six civil year engineer. very long Yeah. period. That's very great actually. Yeah. Okay, and from which state you are? I'm born and brought up in Assam itself. So like I am right now also working in Assam. Okay, sir. So few questions are there from our viewers. So let's start our question answer session. Mhm. What is the work profile of engineer trainee basically? Generally, we have like engineer trainees. The work profile is not exactly so well defined. Like we have to. It depends on the what kind of like not kind of like what engineering you have done. Like so electrical, Mhm. they are generally posted in O&M work or as an executive trainee, we have a defined work profile. Like first 4 months to 5 months, we have on-job classroom training. For executive trainees, we have classroom training in our headquarters, like in corporate center, that's Gurgaon. And then after that executive trainee job, that on-job training, sorry, on-classroom training is over. We have a training in field, which we call as Okay. on-job training. And I don't know about the current one exactly, but in our thing, when we have got the campus selected and when our batch was selected, we had 1 year trainee period and another 3 years on probation. So Okay, mine, 3 years everything is for clear right now. probation. Yeah, but we do not have any bond like whether that we have in other department, other PSUs like in ONGC and other like when you're on Right, right. probation, you don't get increment or anything like that. We have that. So in terms of financial term, like we have a good, like Okay, we okay. really have good packages and all. So after 1 year training is completed, like classroom training plus the on-job training, then we have a final assessment, which for executives we nowadays mostly online are going on because of Corona, but earlier we used to have we a session there in corporate center, and there we have another 6 or 7 days, sorry, 3 or 4 days of interaction and all, and then final posting of locations. And the posting of locations also is defined on the like how's the performance in your training period, as well as the work requirements. Okay, okay. So, sir, basic question is that what is the work of PGCL? If you can give us a little brief about that. The main business of Power Grid Corporation is transmission unit. So like what we do is like we are dealing the core transmission of power from one thermal power station or solar power station or like renewable or non-renewable sources. Whatever the power they produce, we transfer it from one state to another. We do not go for like uh, directly. We don't deliver it to the consumers. We give it to the Okay. state. So we have business to business dealing. Like we take the power from the suppose NTPC has a plant and there the power is produced. So what we do is like we transfer the power from NTPC and we will distribute it accordingly to different states as per their requirement. That is the prime business. And then after that we have consultancy work, which we are doing it. Like we right now I am working as in a consultancy project where of Northeast Power System Improvement Project funded by World Bank. So what we are doing is like we are constructing the power scenario in Northeast.
at the extra high voltage level as well as distribution management system level, and we will complete it, and we will hand it over to the state utility, like the state. So this is the current work scenario of Power Grid. Then we have our telecom business, and we have also expanded our consultancy works as well as our consultancy works abroad in developing countries, probably mostly. So this is how the work is defined, and now there are two parts. One is we have to maintain the already constructed work, that already constructed line unit. So that comes into O&M and operation and maintenance. So that is one part, and another, we have to add more infrastructure to the nation as well as to our company. So that is called construction part. And what are the departments are there, and depending on your branch, is there allocation of department or any random allocation of departments to all the engineers of The different branches? departments are yeah. The departments are generally internal, so I cannot reveal the exact departments. But since it's a PSU, so most of the works are all given in contract basis. As per our procurement policy, we have to do it in contract. So we have CNM, like contracts department. That is very much common to every PSU. We have HR, contract, quality management, vigilance, etc. departments, like so many departments. And based on your qualification, most of the departments are given, as well as we have a luck. Luck is also a part. Like if you're lucky, sometimes then you get a better department. But almost all the departments are good only. It's the mainly is the location or the posting of the places, which depends somehow on luck also. Okay. So okay. And now, as you spend almost 6 to 7 years there, so how you feel the culture about Power Grid? Earlier we used to have the mentality when we like before we joined, like we have a government job, it's a secure job, and we do not have much work, like boss giri and dadagiri or something like that. But that is totally not right. We are working just like any other company the employees are working, and the growth is there. Like we cannot say that like वो पुराना जमाना का था, like कि हाँ ऑफिस गवर्नमेंट कंपनी ज्वाइन कर लिया, आराम से बैठे रहे और सैलरी मिलती रही, ऐसा नहीं. We have to work, and if someone is looking for that kind of thing, like हाँ यहाँ चले जाएंगे and हमको कुछ काम नहीं करना होगा, then I don't think this is the right option. Power Grid employees as well as Power Grid is very much focused on work-life balance. Like we have to work, at the same time we have ample opportunities to maintain our personal life also. ओके, सो वर्कलोड, यही क्वेश्चन था कनेक्टेड इसको कि वर्कलोड कितना है पावर ग्रिड में? वर्कलोड तो कम में ही रहता है, बट उतना ज्यादा नहीं है. लाइक as I said, like you have sufficient time to maintain your personal life as well as work life balance जो है, it is very अच्छा है, like दोनों maintain होता है. So at the same time we have higher opportunities भी रहते हैं. Like recently हम लोग का management classes भी start हो रहा है, diploma, like those who want to do MBA, so we have tie-ups and वो सब भी है. So like there is ample opportunities for career growth, at the same time ample opportunities for work-life balance, and we have one of the best medical facilities. Like medical में सबसे अच्छा है. We do not have any capping, like इतना, if there any need is there, we have a like उनको मिलता है. So medical is there, and in my 6 years of experience, like I'm very happy, no complaints. I am happy with the workload and everything. Yeah, initially थोड़ा workload ज़्यादा था because civil, when you are coming from another background now, which you are not a part of, like, so it gets a little bit loaded. But once you come with the basic knowledge about the things कि कैसे power transmission होता है and what are the bus bars and all equipments क्या है वो सब, then everything is fine. थोड़ा ये कैसे इलेक्ट्रिकल में आ गया है वो भी, थोड़ा इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिकल बंदों के लिए है. अब सिविल से हो तो टाइम लगा होगा थोड़ा स्टार्टिंग में. हाँ वो तो लगेगा, because for electrical this is a dream company. right. And here we have very limited civil people, so हमारा भी load रहता है. And another thing is that I was saying कि I just forgot,
But once you are accompanied with the, yeah, what I was saying, like we have a SOP, like guidelines for doing every work. Like you have seniors who will support you. At the same time, you have juniors who will listen to you. Mm-hmm. And वो पूरा गाइडलाइन रहता है कि लाइक इफ यू हैव अ वर्क थ्रू लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, व्हाट आर द प्रोसीड्यूर्स, प्रोस एंड कॉन्स क्या रहना है, एवरीथिंग इज देयर, सो इट इज वेल डिफाइंड. एट द सेम टाइम there are a lot of things which once you join the company you get to know it. Okay, sir. So the next question was the what are the facilities? So just you mentioned one medical facility. Excluded that, Yeah, any other facilities provided by Power Grid? yeah, that is on the payroll. There are a lot of Mhm. facilities. We are one of the best, like हमारा facilities जो है one of the best है in all the PSUs. Okay. So like we have medical, traveling allowances. Then अभी जैसे लॉकडाउन में बहुत कंपनीज एंड बहुत सॉर्ट आउट एंड कट ऑफ कर रहे हैं. We do not have that. Right, In right. fact, like हमको PRP भी मिलते रहता है. And then yearly कुछ ना कुछ आते ही रहता है, like electrical purchase or something like that. So financially one of the happy company. Like the staffs are very happy with the financing. Like, इसीलिए अभी तक मैंने चेंज नहीं किया because I'm satisfied with वही. ओके ओके. एंड क्वार्टर फैसिलिटी कैसा है, मतलब अभी आप जिस स्टेट में हो, असम में, yeah. क्वार्टर में क्वार्टर रहते हो आप? फैसिलिटीज डिपेंड्स ऑन, वो उस पर डिपेंड करता है. लाइक आप अगर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड सबस्टेशन है जहाँ पे ओएनएम एंड ऑल है, या जहाँ पे पावर ग्रिड का खुद का एस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे आपको क्वार्टर फैसिलिटीज अवेल किया जाता है. सपोज इन मेट्रो सिटीज वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, तो वहाँ पे उतना क्वार्टर बनाना पॉसिबल होता नहीं है. तो यू आर प्रोवाइडेड लीज एकोमोडेशन, आपको लीज भी मिलता है. एंड राइट नाउ आई एम इन दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग का खुद का एस्टेब्लिशमेंट है नहीं. वी हैव एवरीथिंग ऑन रेंटेड बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफिस. तो हमें HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस. ये हाउस रेंट अलाउंसेस सभी PSU का सेम है बिकॉज इट्स राइट राइट. गवर्नमेंट गाइडलाइन. एंड वी ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटीज, लाइक ये भी रहता है कि लाइक यू कैन रिटेन योर फैमिली इन सम अदर प्लेस ऑल्सो. Retention facility is also there. Like if you're working in these locations where there are no establishment, but your family is in somewhere else, so you have that option that you can retain your family there. ओके. And स्पेशली especially in difficult, गर्ल्स कैंडिडेट का प्रॉब्लम रहता है कि शादी के बाद उनको मतलब ये करना पड़ता है, तो उनके लिए मतलब ट्रांसफर हो सकता है. हाँ, उनका एक वो होता है लाइक द हस्बैंड एंड वाइफ, जो हमारा पॉलिसी भी चल रहा है. लाइक हमेशा तो गारंटी नहीं होता बिकॉज एट द एंड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट. बट देयर इतना हम लोग फैसिलिटेट करते हैं पावर ग्रिड से कि हस्बैंड एंड वाइफ आर पोस्टेड इन द सेम लोकेशन. जो ट्रांसफर्स है वो मतलब कितने सालों बाद होता है ट्रांसफर्स? देयर इज मिनिमम 3 years के बाद तो ट्रांसफर पॉसिबल है, और उससे पहले भी एज पर वर्क नीड होता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या मेडिकल ग्राउंड पे भी कभी कभी देते हैं. एंड इट कैन गो मोर देन 3 years ऑल्सो. 3 years या 4 years के बाद भी होते हैं. ट्रांसफर इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑल्सो. एज पर रिक्वायरमेंट, या ओके. Okay, so the next question is any foreign tour opportunity one will get while working in PGCIL? Yeah, electrical people, they get a lot of point or opportunities. Like Mary Batchman joined KTG, the one who was there with me. She has been to Paris, France, and so many places for like हमारा जैसे बहुत सारा आइटम है, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं. We are dealing with we have already dealt with 1200 kV line. तो उसके जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो सारे सारे अब्रोड के हैं. तो कुछ स्वीडन से आते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स एंड कुछ मटेरियल्स इधर से आते हैं, तो उनके फैक्ट्रीज में हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं. तो वी डू गेट द अपॉर्चुनिटीज पॉइंट का. एंड एज वी टोल्ड लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वी हमारा खुद का बहुत सारा कंसल्टेंसी चल रहा है अब्रोड में, इन डेवलप कंट्रीज एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो. तो वहाँ पे पोस्टिंग होता है हमारा. वी गेट टू वर्क देयर फॉर 1 year, 2 years or 3 years डिपेंडिंग ऑन वर्क कब तक खत्म हो. Okay, so the next question is that what is the promotion period of when one join as a engineer trainee, and what is the next level and what is the time for promotion? प्रमोशन जनरली सारे PSUs का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके डिफरेंस होता है. अभी जैसे हमारा 3 years में एक प्रमोशन होता है
सब्जेक्ट टू हमारा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर की तरफ से वो आता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वहाँ पे 3 years प्रमोशन होते रहते हैं। एंड देन जैसे वी गो अब मैनेजर लेवल, चीफ मैनेजर लेवल, तो वहाँ पे अलग अलग गाइड। ओके सर, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जो रिक्रूटमेंट आया है पीजीसीएल का डायरेक्टली टू ग्रेट ही है, तो आपने तो डायरेक्टली कैंपस से ही आपका हुआ था, तो आपका आई गेस जीटी हुआ होगा राइट? आप थोड़ा आपको रियायत होगा आपको कुछ ग्रुप डिस्कशन या वो हुआ था, हमारा ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था। एंड लाइक ग्रुप डिस्कशन पे उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेस नहीं पड़ा था, हमारा पर्सनल इंटरव्यू में ज्यादा होता बिकॉज वी वे कैंपस ओरिएंटेड ना। तो हमारा पर्सनल इंटरव्यू ज्यादा हुआ था बेस्ड ऑन आवर मार्क्स एंड ऑल। तो क्या ओके। पर्सनल इंटरव्यू में मेरा तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड नहीं था कुछ, मेरा सिविल रिलेटेड था, तो मेरे को सारे सिविल रिलेटेड पूछे। एंड सिविल रिलेटेड मैं बता सकता हूँ क्या है, हाँ, इलेक्ट्रिकल थोड़ा रिलेटेड बहुत में कुछ आपको आपको पावर। क्वेश्चंस अगर आप बता पाए तो वो बेटर होगा मतलब। जनरली सिविल इंजीनियर्स के लिए तो वो होता है कि लाइक उनको फाउंडेशन एंड देन हमारा जो एग्जीक्यूशन वर्क जनरली है, फाउंडेशन क्या है, टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स, वो सब थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का भी फोकस करना होता है। एंड जो पावर रिलेटेड है स्ट्रक्चर वर्क। एंड फिर हम लोग का वो रहता है लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, उस पर फोकस करने से इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए आसान रहता है। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो मेरे इलेक्ट्रिकल पर्सन थे वो उन्होंने बताया था कि पावर ट्रांसमिशन वो सब पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड देन उस पे मेनली रहता है लाइक, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन रिलेटेड हाँ, वो है, ट्रांसमिशन तो पावर उस पे सिस्टम में फोकस पूरा आ गया करते उनका, हैं। ट्रांसमिशन वो सब आ गया हाँ, उसमें। पावर सिस्टम में आ गया। एंड जनरेशन का भी हम लोग का रहता है, जनरेशन, हाँ, लाइक जनरेशन हम लोग ट्रांसमिशन। का क्वेश्चंस रहेंगे इंटरव्यू में, क्वेश्चंस रहेंगे। एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्मर्स, उन सब पे इक्विपमेंट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स एंड वो सब पे रहेगा आपका। फिर लाइन रिएक्टर्स वो सब पे रहते हैं क्वेश्चन, तो उन सब का नॉलेज रहना चाहिए, लाइक हाउ द ट्रांसफॉर्मर फंक्शंस, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर कैसे बनता है, और देन इक्विपमेंट सीटी सीवीटी ये सब कैसे बनते हैं, इनका फंक्शनिंग कैसा रहता है, व्हाट आर द टाइप टेस्ट एंड ऑल वी डू, वो सब नेट पे मिल जाएगा आराम से। तो उन सब पे फोकस करने से इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आसान रहते हैं। ओके। और और आपका अगर जो आपका जैसे इंटरव्यू कोई है वो पूरा इंटर्नशिप, पर्सनल इंटरव्यू हुआ था या टेक्निकल हुआ था? टेक्निकल हुआ था एंड एज वेल एज पर्सनल। आपको सिर्फ टेक्निकल तो आपका रहेगा, जैसे मैंने टेक्निकल ऑलरेडी बता दिया। पर्सनल इंटरव्यू में लाइक इट्स नॉट पर्सनल, उतना नहीं होता पर्सनल में, जैसा सबका होता है हॉबीज एंड ऑल पूछते हैं, तो वो तो नॉर्मल। रहता ही है। आपको जनरल नॉलेज अवेयरनेस भी होना चाहिए, आपके एरियाज में, आप जो एरियाज में रहते हैं उसके एक लोकेलिटी के बारे में कुछ जानना जरूरी है। हाँ, हाँ, लाइक हाँ। एंड एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट सेक्शन है, लाइक मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में कौन कौन है एंड ऑल, लाइक एमपी एंड वो सब आपका डायरेक्शन वो सब रहना चाहिए, वो जनरल आईक्यू रहना चाहिए, क्योंकि वो उसके बारे में भी पूछते हैं हम लोग को इंटरव्यू में। और ओके, हमारा इंटरव्यू सेक्शन पैनल में एक आईएएस ऑफिसर रहता ही है, तो ओके, वो हाँ। सब चाहिए होता है। ओके, तो मैक्सिमम मतलब टेक्निकल और थोड़ा बहुत पर्सनल इंटरव्यू ऐसा टाइप का रह सकता है। रहेगा रहेगा टेक्निकल, जनरल नॉलेज एंड पर्सनल रहेगा। ओके, ओके। और आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होता राइट? मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ था, लेकिन उतना ज्यादा देर चला नहीं था। वी हैव स्मॉलर टॉपिक, लाइक ऐसा टॉपिक लेते हैं जहाँ पे आप वो लाइक कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा सा, बट लाइक उसका एक सॉलिड रहता है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे ग्रुप डिस्कशन में नहीं हुआ था। ओके, ओके, ओके। और ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो नॉर्मल, आपको यूट्यूब में जो ग्रुप डिस्कशन मिलेंगे वो सफिशिएंट है। आपको अपना कुछ टॉपिक को लेके एक सिचुएशन बेस्ड होते हैं काफी सारा, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्रिएट होते हैं, जैसे लाइक ऐसे कुछ प्रॉब्लम दे देंगे, उसके बेसिस पे भी डिस्कशन होता है, तो इस तरह से रहता है। ओके, और जो इंटरव्यू में आपको खासकर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, जो आपका प्रोजेक्ट था? फिलहाल तो मेरे इंटरव्यू में वो सब नहीं पूछा, बिकॉज व्हेन वी कम फ्रॉम कॉलेज so they don't have much ideas about the college. Yeah, what you have to have an idea is like you have to get an idea about like if you're going for any interview in any company, तो वो कंपनी कैसे डील करती है एंड उसके करंट प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, उसका स्टैंडर्ड कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है, वो सब थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो उनके बारे में जानना जरूरी होता है। बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि हाँ आप हमारे पास आ रहे हो तो हमारे बारे में कुछ जानते हो कि नहीं, तो वो जानना जरूरी है। ओके, ये बहुत ही एंड अच्छी लाइक आपने इंफॉर्मेशन दी। मेरे टाइम पे एक्चुअली मुझे पता नहीं था, बाद में मुझे पता चला। बाद में ही अपने को पता चलता है इंटरव्यू के बाद ही क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके सर, तो फाइनल टिप आपकी तरफ से कुछ मतलब जीडी के लिए और इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को? जीडी शुड बी लाइक अ जीडी, इट शुड नॉट बी एन आर्गुमेंट, लास्ट में जाके आर्गुमेंट टाइप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डन एज एन जीडी। एंड
in a case of GD, one should remember that आपको ample opportunities, you have to be a better listener, at the same time you have to be better speaker. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हर लोगों की बात काट के अपना व्यू पॉइंट रखते हो. हाँ. ऐसा होने से लाइक एक the observant who एक्चुअली is there क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि observe उनको भी एक बोला होता है कि आपको बोलना है, कुछ तो बोलना है आपको जीडी में. नहीं तो उसी प्रेशर में वो बोलते हैं. कुछ बोलना के चक्कर में क्या होता है कि लाइक कुछ लोग इतना ज्यादा हो जाते हैं कि लाइक वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते. तो सबको मौका देना है, एंड वॉट एवर वी स्पीक इट शुड बी टू द पॉइंट स्पीक करना. इधर उधर के फंडे लगा के लाइक स्टोरीज यहाँ से लेके ऐसे नहीं करना. हमको जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही बात करना है. एंड सेकेंडली, जो मैंने ऑलरेडी बोला, आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी लेना पड़ेगा बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू. एंड जनरल अवेयरनेस रहना पड़ेगा. काइंड जो चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, वो काइंड अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस रहना पड़ेगा. ये सब तो है. एंड टेक्निकल तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए. ओके, सो दैट्स इट सर. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक क्वेश्चन, आई होप कि सभी स्टूडेंट के क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया. तो थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े हमसे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. ऐसे ही आप उधर रहो और ऐसे ही हमें गाइड करते रहो, यही आशा है. एंड प्लीज कांटेक्ट मी. आपके चैनल के थ्रू अगर कोई आता है, लाइक इफ एनी पर्सन who is your subscriber and who is your related to your channel, if he gets in Power Grid, let me know. It would be my pleasure to know that मेरा कुछ किसी के लिए काम में आया. Contribution sir, yes. Okay. Definitely. Thank you sir. Thank you so much for connecting. Okay, thank you.